Hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. This is part 4 of my all new series Engineering Physics. So जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल में नए हैं और अपने बेस्ट फ्रेंड से जरूर शेयर करें जो कि बीटेक पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है. तो प्लीज शेयर करें. अगर आप मैनेजमेंट कोर्स से आए हैं तो डेफिनेटली आप अपने बीटेक फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मोशन इन 1 and 2 डायमेंशंस. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे. इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स कवर किए स्मॉल वीडियोस के फॉर्म में, चाहे हम बात करें डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में या प्लैंक्स थ्योरी के बारे में या कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में. तो इफ यू हैवंट वॉच्ड दोस वीडियोस यू कैन वॉच इट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Let's start, but before that, if you're new to the channel, once again, please subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notifications. So, without any delay, let's understand motion in 1 and 2 dimensions. सबसे पहले हम बात करते हैं motion in 1 dimension की. So, in 1 dimensional motion, आपको याद रखना है कि 1 dimensional motion की जब हम बात करते हैं, तो the object is always, moves along a straight line. तो वहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. सो अब वो स्ट्रेट लाइन, दिस कैन बी अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस कैन बी अलोंग द वाई एक्सिस. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मोशन इन 1 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. ध्यान से सुनना आप. So one simple example of 1 dimension of motion can be a car driving along a straight road. So suppose a car is driving along a straight road. एक स्ट्रेट रोड में चल रही है इन 1 डायरेक्शन. सो अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ अ मोशन की, तो वो 1 डायमेंशन होगा. क्यों? क्योंकि इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली, इन अ स्ट्रेट रोड ओनली. सो either it only moves forward or backward, but along the straight path of the road. So if we call the starting point of the journey, let's suppose O, then car's position at any time, it can be described as a single number which will indicate that how far it has traveled from the starting point. That's what speed and direction us here. The speed of the car, it will tell us how quickly it is moving, and the direction will tell us which way it's going. तो यहाँ पर हमें you need to understand this thing कि यहाँ पर इस केस में we don't need to consider this motion up and down or side to side. It's just a straight line of the road in 1 dimension. So I hope आपको scenario clear होगा 1 dimension of motion का. Let's talk about motion in 2 dimension now. But before that, before moving to motion in 2 dimension, let's understand few things about this 1 dimension motion. कुछ चीजें. So we have, जब हम बात करते हैं 1 dimension of motion की, we have so many things that we need to consider. Let's move on to the notepad so that we can study it clearly. Okay. We just take white. Yes. Okay. So सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. तो सबसे पहले जो चीज हमें समझनी होगी कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताता है कि कोई चीज कितना डिस्प्लेस हुई है, अपनी पोजीशन से कितना चेंज उसमें देखने को मिला है. सो डेफिनेटली displacement is the change in position of an object, and it's a vector quantity. You need to understand this thing. It's a vector quantity because it has both magnitude and direction. Coming to velocity, what is velocity? Velocity is nothing but it is the rate of change of displacement. तो जब हम बात करते हैं displacement किस rate से change हो रहा है, तो वो हो जाती है velocity. यानी कि change in displacement with time, that is the rate of change of velocity. Definitely velocity once again is a vector quantity. Once again velocity is a vector quantity. Let me just quickly close the Wi-Fi. Okay, let's talk about a few more things. Okay, now what about speed? What is the speed?
You all know speed is a scalar quantity. Why speed is a scalar quantity? Because it just tells us the value, the magnitude. It is a rate of change of distance traveled. कितना distance travel किया अभी rate कितना है change of distance traveled का. So it just tells you the magnitude. Direction की बात नहीं होती यहाँ पर. Then acceleration. What about acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. That's what acceleration is. The rate of change of velocity. It can be constant, it can be variable. So that's what your acceleration is. The rate of change of velocity. So I hope this is clear to you. कि वन डायमेंशन में ये टर्म्स आपको आई होप मैंने जो एक्सप्लेन किए हैं वो आपको क्लियर हो गए. अब इनमें इतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं और हम इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ कंसेप्ट को एक बार जस्ट रिफ्रेश कर रहे हैं. अगर आप भूल गए हो तो वी आर जस्ट रिफ्रेशिंग द कंसेप्ट फॉर यू. Now let's move ahead and talk about two-dimensional motion. So let's just go into the slides now. Let's talk about motion in two dimensions. So in two-dimensional motion, an object moves in a plane. यहाँ पर क्या होता है? Object जो है कहीं ना कहीं plane में move करता है. Objects move in a plane. अब इसका example अगर मैं आपको दूं, let's suppose basketball being shot into a hoop. So imagine करो एक basketball player है और वो ball को कहीं ना कहीं जो hoop होता है उसमें डाल रहा है. So here you can imagine the dimensions of motion. क्या वो सिर्फ straight line है? नहीं. Here the basketball's motion, it is described in two dimensions. Along the court, ध्यान से समझना, मैं खड़ा हूं यहाँ पे नीचे और मैं ऊपर कोर्ट की ओर बॉल को फेंक रहा हूं, तो अलोंग द कोर्ट हॉरिजॉन्टल मोशन देखने को मिलेगा. और एक मोशन है अप एंड डाउन बॉल का, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, दैट्स वर्टिकल मोशन. तो दो डायमेंशंस में हम यहाँ पर मोशन को एक्सप्लेन करेंगे, हॉरिजॉन्टल विच इज अलोंग द कोर्ट एंड वर्टिकल अप एंड डाउन. ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो बॉल विल फॉलो अ कर्व्ड पाथ which is also known as parabola in science, and this path is results from the combination of this horizontal and the vertical motion. Horizontal जब बॉल को हम थ्रो करेंगे, and vertical the height of the throw and gravity pulling the ball down, that's what vertical is. So it follows a parabola. So अगर हम बात करें कि टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, because both are important for predicting where the ball will land and whether it will go through the hoop. So for that it's really very important to consider both the dimensions, and that's why it is written here कि in two dimensional motion an object moves in a plane. The motion can be broken down into horizontal and vertical components, usually along the x and y axis. So I hope आपको ये चीज समझ में आई होगी. एग्जाम्पल की मदद से ये चीज हमने समझने की कोशिश करी. Similarly, let's talk about this using your formulas. Let's understand. Okay, let's suppose क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन है, यहाँ पर हम 2D मोशन की बात कर रहे हैं. Now here the motion can be broken down into horizontal and vertical components. So जब हम बात करते हैं वो horizontal और vertical component की, it means x and y axis. We have to talk about these two axes also, x axis and y axis. Now डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, सो क्योंकि यहां पर दो एक्सेस इन्वॉल्व हो गए हैं, सो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी द वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन विद कंपोनेंट्स change in displacement delta x and delta y. Change in displacement. Velocity, if you need to find out, velocity will be indicated as square root of velocity along x-axis का square plus velocity along y-axis का square. That's going to be your velocity. The magnitude of velocity is given by that.
And let's talk about the direction. How can you find the direction? So in order to find the direction of it, you can use this formula. Theta is tan inverse velocity along y-axis upon velocity upon x-axis. That's how you can find the direction. Talking about the acceleration part. How do you find the acceleration? So acceleration you can define by using components acceleration along x-axis and then acceleration along y-axis. So if the acceleration is constant, you can, the kinematic equations applied to each dimension will be separate. Like for example, velocity along x-axis will be initial velocity along x-axis plus acceleration along x-axis time. Similarly, velocity along y-axis will be initial velocity along y-axis plus acceleration along y-axis time. That's how you can find it. Okay, so let's move on to the direction, to the question parts. Sorry. Now there is this one question. A car travels 100 meters north and then 50 meters east. एक कार है जो कि 100 मीटर नॉर्थ चल रही है एंड देन 50 मीटर्स ईस्ट चल रही है. आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार. देन you need to find the magnitude of the car, of the displacement vector, and then you need to find the angle of displacement with respect to the north direction. Now let's just solve this question. Okay, okay, so you can see what the question is. In order to find the total displacement, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखा है कि कार ट्रेवल करती है 100 meters along north. So along north कार कितना ट्रेवल कर रही है? 100 meters. 100 meters. And then along east वो कितना ट्रेवल कर रही है? 50 meter. So here you can say कि along y vertical leg वो 100 meters ट्रेवल कर रही है, along east that is horizontal component वो 50 meters ट्रेवल कर रही है. So immediately the very first part you can calculate the total displacement, and here the total displacement, in order to find it we need to consider both the north and the east component as a vector. So we can represent this with a right triangle, and we can find the displacement vector as a hypotenuse of the right triangle. So this is going to be the displacement vector. You can find it using the formula 100 square plus 50 square. You'll be easily able to find this particular displacement vector. You can find the magnitude value of it. Then in the third part, find the angle of displacement with respect to the north direction. So with respect to the north direction, you need to find the angle of displacement. So just now I've told you the formula for this is tan theta is equal to the eastward direction, which is 50 meter, and the northward direction, which is 100 meter here. So you'll get tan theta is equal to 0.5. So approx it will be 26 degrees. So that's how you can find the angle also. So I hope you got
द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड और फिर एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. इट्स जस्ट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन टू गिव यू क्लैरिटी regarding this. So that's it about this video. We'll see you in the next lecture. Till then, keep studying. Take care.